Student, let us see exercise number 2.2 of second chapter Polynomials. Second chapter Polynomials, exercise number 2.2. Question number first. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहां पर दिया गया है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी शुड नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है. तो व्हेन डिग्री इज 2 इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस. तो एक रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशनशिप होता है और वो रिलेशनशिप इस प्रकार है. इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से. Sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. And in this polynomial, in this quadratic polynomial, coefficient of x is b and coefficient of x square is a. It means sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square or is equal to minus b upon a. And product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x square. And in this quadratic polynomial coefficient is c and coefficient of x square is a. Therefore product of zeros is equal to c upon a. Now we take first part of first question, that is x square minus 2x minus 8. और इस तरह के पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना आप लोग क्लास 7 से ही सीख चुके हो. क्लास 7 में भी, क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी. चलिए हम लोग इसको फिर से देखते हैं एक बार. इसमें 3 टर्म्स हैं. तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो है 8. ये वाला और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होता है इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माने दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. 1 into 8 दैट विल बी 8. 1 into 8 इज इक्वल टू 8. अब इस 8 का इस तरह से हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. 2 फैक्टर ऐसे फाइंड आउट करते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 2 के इक्वल हो. सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है. मींस अगर प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव आता है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, अगर प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है तो ऐड करने पर. तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 2 मिलना चाहिए. तो वी गेट हियर 4 into 2. 4 2 जा 8 and 4 minus 2 is equal to 2. Therefore we can write 4 minus 2 at the place of 2. Here we write x square minus 4 minus 2x minus 8 is equal to x square minus 4x मल्टीप्लाई करते हैं इसको माइनस माइनस प्लस 2x minus 8. Now we have 2 terms, first term and second term. So we see in the first term
what is common? We see here x is common, therefore we take x as common. Then we have x minus 4, and here we take 2 as common. Then we have x minus 2 4 ja 8. Now we have again two terms, first term and second term, and in both terms we see x minus 4 is common, therefore x minus 4 we take as common. Then here is x, now plus here is 2. This is the factor of this quadratic polynomial. Now we have to find out when the value of this quadratic polynomial will be 0. So if we see both factors, then we can find out values of x. How? We see here, when this term is 0, means when x minus 4 is 0, then product of x plus 2 into 0 will be 0 and value of polynomial will be 0. फिर से देखते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कैसे होगी, कब होगी. तो इसके लिए हम इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखते हैं. अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. और अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर 0 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी. देयरफॉर हम सपोज कर लेते हैं यहां पर कि दिस वैल्यू इज 0. लेट x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to 4, or x plus 2 is equal to 0, x is equal to plus 2. Transpose other side, then we get minus 2. Therefore zeros of the polynomial are 4 and minus 2. इस पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस हो गए. अगर इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर हम माइनस 2 पुट कर देंगे तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. और आप इसको पुट करके x की वैल्यू इसको पुट करके आप इसको देख सकते हो, वो 0 हो जाएगी. नाउ वी हैव टू verify relation between zeros and coefficients. So we see here sum of zeros. First of all, we find out sum of zeros. Sum of zeros is equal to sum of zeros. First 0 is 4 plus second 0 is minus 2. Then sum of zeros will be 4 minus 2 is equal to 2. And we know sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Therefore we get minus coefficient of x upon coefficient of x square is equal to coefficient of x is minus 2. This minus is this. Minus into minus 2 upon coefficient of x square is 1. Minus minus plus. We have 2. We see here sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Therefore we can write here sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Therefore this relationship is verified. Now we take other relation. What is the other relation? Product of zeros. We find
product of zeros. First zero is 4 into second zero is -2. Then we get -8. Product of zeros is equal to -8. And what is the relation? Product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x square. So now we get value of this, means constant term upon coefficient of x square. Constant term is, we see in the question, constant term is -8 upon coefficient of x square is 1. Coefficient of x square is 1. Therefore, this value is equal to -8. We see here product of zeros and constant term upon coefficient of x square both are equal. Therefore, this relationship is also verified. Therefore, we can write here product of zeros, is equal to constant term upon coefficient of x square. Coefficient of x square. Therefore, this relationship is also verified. Now we take other part of this question, and that part is part number 3. Part number 3 is 6x square minus 3 minus 7x. We should write it in standard form. 6x square minus 7 minus 3. Now this is quadratic polynomial. So again we have to do same thing as we had done in part first. Means we have to find out product of this and this. 6 into 3. 6 into 3. It means 6 into 3. This is equal to 18. 18. वो भी 18 कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि 6 into -3 then 18 will be negative. तो अगर 18 निगेटिव है तो 18 के 2 फैक्टर में ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन 7 हो. जिनका सब्ट्रैक्शन 7 हो. तो इट मीन्स 9 into 2. 9 2 जा 18 and 9 minus 2 is equal to 7. Therefore, we can write at the place of 7 9 minus 2. मैं 7 के प्लेस पर क्या राइट कर सकता हूं? 9 minus 2. 6x square minus 9 minus 2x minus 3. 6x square minus 9x minus plus 2x minus 3. Now we have two terms, first term and second term. In first term we see 3x is common. Therefore, we take 3x as common. Then we have 3 2 ja 6 2x minus 3 3 ja 9. Now, in this term, 1 is common. When nothing is common, then 1 is always common. You should remember it. 1 is common, therefore 1 into 2x minus 3. Now, again we have two terms. In both terms, we see that 2x minus 3 is common. Therefore, 2x minus 3 is common. Then we have 3x plus 1. Now, we have found the factor of this quadratic polynomial. तो जो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने फैक्टर फाइंड आउट कर दिया, तो जीरो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। When this is zero, then product of this factor will be zero. When this is zero, product of both factor will be zero. तो therefore यहां पर ले लेते हैं let 2x minus 3 is equal to 0. Then 2x is equal to minus 3. Transpose other side. Then we have 3. X is equal to 3 by 2. Or we take this is equal to 0. 3x plus 1 is equal to 0. Then 3x is equal to 1. Then x is equal minus 1. पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव था, ट्रांसपोज किया था, पॉजिटिव हो गया था। x is equal to minus 1 upon 3. Therefore, zeros are given polynomials are 3 upon 2 and minus 1 upon 3. Now we have to verify relation between zeros and coefficient. We find sum of zeros. Let us see sum of zeros. First zero is 3 upon 2 plus second zero is minus 1 upon 3. 3 3 ja 9 minus 2 1 ja 2 upon 3 2 ja 6. Then we have 7 upon 6. Now we find value of this. This is equal to minus coefficient of x. Coefficient of x is minus 7 upon coefficient of x square is 6. Then this is equal to 7 upon 6. We see here both are equal. We see here both are equal. Therefore, this relationship is verified. Therefore, we can write here sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. Again, we take another relation, that is product of zeros. Product of zeros means first zeros is 3 by 2, second zeros is minus 1 by 3, 3 is cancelled by 3. This is equal to minus 1 by 2. Now we find out value of this constant term. And we see here constant term is minus 3 upon coefficient of x square. Coefficient of x square is 6. Therefore, we get here minus 1 by 2. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. And we see here both are equal. Therefore, this relationship is also verified. And now you can write. Now we take another part of question number first. Another part of question number first. We take fourth part of question number first. Fourth part. What is fourth part? 4u square plus 8u. Here are two terms and we see 4u is common in both terms. 4u is common. 4u is common. Then we have u plus 2. 4 2 ja 8. So factor of this quadratic polynomial is equal to 4u into u plus 2. When for which value of u the polynomial has 0. Value
एज 0। इट मीन्स u की किस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। इसके लिए हम लोग यहां पर देखते हैं 4 कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो आइदर u इज 0 और u प्लस 2 इज 0। तो लेट u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। Therefore zeros are 0 and -2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोज कौन कौन से हो गए? 0 एंड -2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोस वी नो, फर्स्ट जीरो इज 0 and second zero is -2. Therefore sum of zeros is equal to -2. Now we find value of this term minus coefficient of x, and now here coefficient of u, because this polynomial has variable u. Therefore we write here coefficient of u upon coefficient of u square. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u इज 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इज 4। 4 2 जा 8। We see here both are equal. Sum of 0 is -2 and value of this term is also -2. Therefore this term is verified. Again we find product of zeros. Product of zeros means 0 into -2. That will be 0। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, मजेदार स्टोरी है, उसको आप लोग ध्यान समझिएगा। एक बार हिस्ट्री के टीचर में और मैथ के टीचर में एक झगड़ा हो गया। तो झगड़े में हिस्ट्री के टीचर ने बड़े गर्व से कहा, मास्टर साहब ज्यादा नहीं बोलने का, नहीं तो अकबर की पूरी सेना में आपके ऊपर चढ़ा दूंगा फिर मैं। तो मैथ के टीचर ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं मास्टर साहब, हम उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग समझ सकते हो कि अकबर की सेना क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो therefore प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u square. Constant term, here we see that constant term is nothing is 0. So constant term will be 0 upon coefficient of u square is 4. Therefore 0. So we see product of zeros is 0 and value of this term is 0. Therefore both are equal. Therefore this relationship is also verified. Now we take another part of this question, part number 5. T square minus 15. We can write it as T square minus square root 15 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है, जो रूट का साइन वो रिमूव हो जाएगा। और वी हैव एन आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वी हैव a स्क्वायर विद t, b स्क्वायर, b मींस रूट 15, देयरफॉर वी हैव a प्लस b मींस t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इस दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो ये 0 हो जाए तब 0 होगा, और या तो ये 0 हो जाए तब 0 होगा। When this is 0, let t plus square root of 15 is equal to 0, then t is equal to minus square root of 15, or t minus square root of 15 is equal to 0, then t is equal to square root of 15. Therefore zeros are
minus square root of 15 and square root of 15. Now we have to verify this relation. Here we see the polynomial has variable t. तो इसलिए इस फार्मूले में भी हम जहां u है वहां पर t राइट कर देंगे। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसको हम लोग इजिली समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको रटिएगा नहीं, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर सम ऑफ जीरो, फर्स्ट जीरो इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस सेकंड जीरो इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस प्लस बोथ आर इक्वल, देन वैल्यू विल बी जीरो। नाउ minus coefficient of u upon coefficient of u square, sorry t, coefficient of t upon coefficient of t square। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, क्या इस पॉलिनोमियल में कहीं t है? t नहीं है, माने t टू द पावर 1, t की सिंगल पावर यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स जो t की सिंगल पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है वो जीरो हो गया था, t जीरो हो गया था। Therefore coefficient of t is equal to 0 upon coefficient of t square. Coefficient of t square is 1. This is equal to 0. We see both are equal. Therefore this relationship has been verified. Again we take product of zeros. First zero is minus square root of 15 into second zero is square root of 15 and value of this is equal to minus 15. Square root of 15 तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। मीन्स क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर हो जाएगा और 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 15 होता है। नाउ वी फाइंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। Constant term is minus 15. Coefficient of t square is 1. Therefore, value of this will be minus 15. We see here both values are equal. Therefore, this relationship is also verified. Now you can write it. Let us see question number 2. नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू एंड सम ऑफ जीरोस is 1/4 and product of zeros is equal to -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उस ए बी सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। पहले हम इसी तरह से देखते हैं। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta। अब इसको हम इस तरह से पहले फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको फार्मूले से फाइंड आउट करके दिखाते हैं।
एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आपको हम सॉल्व करके जरूर बताएंगे। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोगों को पता था, अभी मैं यहां पर बताया था आपको एक रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। Here sum of zeros means alpha plus beta. Sum of zeros is 1/4. अच्छा, we know sum of zeros is equal to minus b upon a. हम आपको बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, sum of zeros is equal to minus b upon a and product of zeros alpha beta is equal to minus 1 and we know alpha beta is equal to c upon a. अब हम कंपेयर कैसे करेंगे, जब इसमें और इसमें दोनों में a की वैल्यू सेम हो जाए तब हम कंपेयर कर सकते हैं। मींस इसमें भी a की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू 4 है, इसमें भी मुझे a की वैल्यू 4 लानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से यहां डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव माइनस 4 अपॉन 4। व्हाट वी सी हियर, we see here a is equal to 4. Now here a is equal to 4. तो when a is, अब दोनों में a की वैल्यू 4 हो गई, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Here a is equal to 4, then b is equal to minus 1. ध्यान से देखिएगा, minus b is equal to 1. Therefore b is equal to minus 1 and c is equal to, a is equal to 4, c is equal to minus 4. Therefore इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे। Therefore क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is a for 4 x square, b means minus 1 x। ध्यान देखिएगा, a की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -1, तो -1x मींस x और c मींस -4। Therefore quadratic polynomial is 4x square minus x minus 4। और इसको हम एक फार्मूले से भी बताने की कोशिश करते हैं, फार्मूले से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड उसको हम कहेंगे। अगर हमें सेकंड मेथड से इसको फाइंड आउट करना है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको भी देखते हैं। When zeros are alpha and beta, then quadratic polynomial will be x square minus sum of zeros means alpha plus beta into x plus product of zeros means alpha beta। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कब होगा ये, जब हमें जीरोस पता हो तब। यहां पे जीरोस अल्फा एंड बीटा। अब इस क्वेश्चन में जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो भी हमें पता है। लेकिन एक बात आप लोगों को पहले ध्यान से सुनना है कि अगर सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फ्रैक्शन में है तब हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट ना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब चेंज हो जाएगा, जब दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमारा सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन में है तब हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस
sum of zero means alpha plus beta into x plus product of zeros alpha beta, this is equal to 0. Then we have x square minus sum of zeros is 1 upon 4 into x, product of zeros is minus 1 is equal to 0. 4 से यहां मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, एलसीएम लेकर के 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 0 0. तो यहां पर जो अपान 4 था वो भी 0 में चेंज हो गया. तो ये हमें क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, यहां पर इक्वल 0 हटा देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एंड दिस इज अवर आंसर. अब आप लोग इसमें के जो अदर पार्ट हैं उनको आप लोग खुद करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी है. आप चाहे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा. अगर कोई क्वेश्चन आपको, कोई इस क्वेश्चन का कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ठीक से नहीं आता है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इजीली आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर या आप इसी में ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी.